गुड इवनिंग। उम्मीद आहे त सभु ठीकु हूंदो। अॼु नए ॾींहं सां गॾु नओं टॉपिक। अॼु जेको पाण नओं टॉपिक पढ़ंदासीं, पंहिंजो अॼोको जेको नओं टॉपिक आहे उहो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आहे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ण खां पहिरीं जेको पाण हिन जो स्ट्रक्चर पढ़ंदासीं। व्हाट्स इट्स स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर जेको आहे हिन जो फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर। Subject plus will have plus manner of third form and object. So structure में जेको आहे सी auxiliary modal plus auxiliary plus past participle. यूज करना सी, ठीक है। सो स्ट्रक्चर में जेको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में पाण इहो टे यूज कंदासीं। इन सां गॾु ई जेको आहे सेंटेंसिस ठाहींदासीं। जस्ट लाइक आई हैव, आई विल हैव submitted assignments। ये जेको आहे पाण हिननि जा जेके अफर्मेटिव सेंटेंसिस ठाहींदासीं, सब सेंटेंस। So we have our sentences. Let's see what they are। जीअं त पाण स्ट्रक्चर में ते डिफाइन करे आया आहियूं, विल हैव सभिनी सां गॾु लॻंदो। ॾिसो आई, यू, ही, शी, दे, अनिल, वी, सभिनी सां गॾु जेको आहे विल हैव लॻंदो। आई विल हैव सबमिटेड असाइनमेंट्स। ओके, देयर में बी ए डेडलाइन, डेडलाइन भी ॾेई सघूं था, ठीक है। यू विल हैव कंप्लीटेड कोर्स बाय दिसंबर। दे विल रीड एंटायर बुक बाय टुमारो। शी विल हैव ट्रेवल्ड टू 3 countries। They will have built new home by next year। Anil will have mastered violin by end of the year। We will have produced 100 tons of flour। So इन सभिनी सेंटेंसिस में ॾिसो पाण खे हिकिड़ी ॻाल्हि ख़बर पए थी त एक्शन जेको थींदो उहो फ्यूचर में थींदो, हिकिड़े टाइम पीरियड में थींदो, ठीक है, मख़सूस टाइम में थींदो। ऐं उते जेको आहे फ्यूचर में ई असीं जेको आहे एक्शन इहो थींदो ऐं उते ई ख़तमु थींदो। ॿियो जेको आहे असीं हिकिड़ी प्रेडिक्शन बि हिते फ्यूचर परफेक्ट जेको आहे प्रेडिक्शन लाइ बि यूज़ थिए थो, ठीक है। प्रिडिक्ट कयूं था, इहो असीं जेको आहे प्रेडिक्शन लाइ बि यूज़ करे सघूं था त बाय नेक्स्ट ईयर, बाय टुमारो, हाँ, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय एंड ऑफ द ईयर। त इहो हिकिड़ी प्रेडिक्शन आहे, फ्यूचर में इहो जेको आहे कमु कंप्लीट थींदो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ इन लाइ कंदासीं त फ्यूचर में को कमु कंप्लीट थिए, हिकिड़े टाइम फ्रेम में, रेफरेंस में या टाइम स्केल ते उते असीं फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमालु कंदासीं, ठीक है। त इन जो नेगेटिव बि पाण सिखंदासीं। इहो अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव में सिर्फ़ु एतिरो ई थींदो फ्यूचर परफेक्ट लाइ। हाणे इन जो नेगेटिव कंदासीं। लेट्स लर्न नेगेटिव। सो नेगेटिव में पाण जेको आहे सिर्फ़ु हिकिड़ो ई कमु कंदासीं, विल नॉट हैव जेको आहे लॻाईंदासीं सभिनी सां गॾु, ठीक है। अच्छा, विल नॉट हैव खे असीं जेको आहे एज ए वॉन्ट बि यूज़ करे सघूं था, ठीक है। विल नॉट खे जेको आहे वॉन्ट हैव रिमेन सेव कंट्राक्शंस बि हिते जेको आहे यूज़ करे सघूं था, नेगेटिव बि करे सघूं था। Whenever we predict something in future that won't be completed by the timeline, by the end of the deadline, तो उते असीं फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ कंदासीं। हिकिड़ी प्रेडिक्शन हूंदी, उहो असांखे लॻे थो त
उनमें असीं कम नथा करे सघूं हिकिड़ो टाइम टेंस में त असीं हुते फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ कंदासीं। त नेगेटिव इन जो क्वाइट ईज़ी आहे। He won't have completed his homework by 7 p.m. You will not have painted this house by Monday. They will not have prepared by the evening. My mother will not have cooked dinner by 9 o'clock. She will not have sent all letters by बाय लगायो या न लगायो तव्हांजी मर्ज़ी आहे। हिते लगायो कोन इंटेंशनली, ठीकु आहे। बाय एंड ऑफ द मंथ, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माय फुल कोर्स by end of the year, we will not have learned English by end of the year. So these all are sentences tells us about negative, how to form negative sentences in perfect future perfect tense. Okay, so let's learn interrogatives. इंटरोगेटिव में छा कंदासीं? पहिरीं जेको आहे मॉडल वर्ब जेको आहे उनखे पहिरीं लिखंदासीं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मैन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, इनमें असां छा कयो आहे? मॉडल वर्ब खे पहिरीं रखियो आहे, पोइ सब्जेक्ट आहे, पोइ हैव आहे, ऐं पोइ मैन वर्ब जी थर्ड फॉर्म आहे। नेगेटिव में पाण छा कयो? सब्जेक्ट खां पोइ जेको आहे मॉडल वर्ब सां गॾु नॉट लॻायो, पर हिते मॉडल वर्ब फर्स्ट में खणी ईंदासीं त जीअं असीं इनखे इंटरोगेटिव में चेंज करे सघूं। So these are the interrogative sentences we have here. So in all these interrogative sentences, you can see the prediction that you are asking about there and that you are telling about. Okay, I have learned, I have saved enough money by next month. So हिते ॾिसो विल जेको आहे सभिनी में पहिरीं पाण लॻायो आहे, पोइ सब्जेक्ट लॻायो आहे, दिस इज सब्जेक्ट। ओके, दिस इज सब्जेक्ट। उनखां पोइ जेको आहे असां हैव लॻायो आहे ऐं देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हिते जेको आहे सेव्ड, learned, visited, planned, prepared, finished, written, third form of the verb with all pronouns, singular noun, okay, or plural pronoun or singular pronoun whatsoever. The structure remains the same. Okay, structure remains same. We won't change, we won't make any changes here in the tense. The sentence पढ़ूं था one by one. I will have saved enough money by next month. You will have learned all the vocabulary by end of the course. Will he have visited all the tourist attractions? Will we have planned entire event by next week? Will she have prepared for presentation by Monday? Will Rajesh have finished his task by end of the week? Will we have written all the report by the deadline? So इन सॼे में पाण जेको आहे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जेको आहिनि इहो आहिनि ऐं इन्हनि खे जेको आहे पाण एक्सप्लेन कयो, इन जो स्ट्रक्चर पढ़ियोसीं, ईअं जेको आहे स्ट्रक्चर ठाहींदासीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट SMP। SMP पाण जेको आहे हिकिड़ो प्रोसेस आहे। Now you have to make sentences with the following words. इन्हनि सां गॾु जेको आहे तव्हां सेंटेंस ठाहींदो, प्रैक्टिस कंदो ऐं कमेंट में तव्हां जेको आहे 3 सेंटेंस एटलीस्ट मूंखे कमेंट में कंदो त जीअं मूंखे ख़बर पए त तव्हांखे इहो टेंस सम्झ में आयो आहे या न। वधीक जेको आहे टेंसिस लाइ असां खां जुड़िया रहो, पाण जेको आहे वधीक टेंसिस सिखंदासीं, प्रैक्टिस बि कंदासीं। जीअं इहो सेशन कंप्लीट थी वेंदो टेंसिस जो, उनखां पोइ पाण प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कंदासीं। ओके, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।